Welcome back students to online education, Gyan Manshi Vidyapeeth, Mawa. Okay, students, so in today's video lecture, we are going to discuss the poem from our main textbook, Flamingo. The name of this poem is My Mother at 66. That is composed by Kamla Das. Students, from the title itself, we can come to know about the theme, the central idea of this poem, My Mother at 66. It means here the poetess wants to convey something about her mother that is actually at the age of 66. The age of her mother is 66. Students, let's have the recap of this poem. What did we discuss in our last video lecture? Students, in last video lecture, we discussed about the central idea of this poem, that is the emotions of a mother and the emotions of a daughter towards her mother. Kamla Das has been composed this poem in a great manner, presenting the ideas and the thinking, the ideology of a mother that is actually aging. A person that has the age of 66, it means the old age. This person possesses the kind of emotions in such a way that actually the person is not able to feel well. The body is weak and the emotion conditional is also weak. Here it is not about the physical condition, but it is also about the emotional condition, because in the poem we can find that in the very beginning of the poem it has been described that actually the poet is there and the poetess can observe the mother beside her. जो poetess है उसने अपने पास में जो मदर वहाँ पे उनके बैठे हैं उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो देखते हैं कि उनके मदर कैसा फील कर रहे हैं, उनके फेस की ओर देख रहे हैं और उनका फेस जो है बहुत ही एज की वजह से पूरा पैल हो चुका है, डल हो चुका है, रिंकल्स आ चुके हैं। वो देख रही है कि उनकी मदर जो है वो कार के बाहर की जो सीनरी है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और मदर एंड डॉटर वो दोनों ही ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे कार के बाहर ग्राउंड में सभी बॉयज़ जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। सो वो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड हियर ऑल्सो द मदर थिंक्स अबाउट हर जर्नी ऑफ लाइफ, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ शी वॉज स्ट्रॉन्ग to do everything, but now there is ache in the body and now actually the mother does not want to go far away from the daughter. जो मदर है वो डॉटर से दूर नहीं जाना चाहती है, पर सिचुएशन ऐसी है कि डॉटर को उनसे दूर जाना पड़ रहा है। और जब सिक्योरिटी चेकिंग के वक्त वो जो एयरपोर्ट पे जाते हैं देन ऑल्सो इट वॉज द सेम सेंटिमेंट, तभी वो सेम कंडीशन दी गई होती है, सेम इमोशंस होते हैं। उसे देखकर मदर को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ऐसे बोलना चाह रही है कि यहाँ से उसे लीव नहीं करना चाहिए, जो डॉटर है उसे वहाँ से दूर नहीं जाना चाहिए, बट शी कुड नॉट से एनीथिंग एंड देयर वाज द सेम पेन ऑन द फेस। Here the daughter also could not say anything else but the smile and smile in the hope that they will meet again. जो डॉटर है उसे भी पता है कि सिचुएशन क्या है, पर वो कुछ और नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ स्माइल करती है अपनी मदर की और इस एक्सपेक्टेशंस में, इस होप में कि वो दोनों फिर से ज़रूर मिलेंगे। So students, let's continue this poem. It was a brief overview and now let's have the summary of this poem. In this poem, Kamla Das explores the theme of aging and death and isolation through a narration involving her mother. Students, when life is there, then naturally death also will be there. And with the passing of time, when the person becomes old, when a person becomes aged, naturally they may feel that they are very close to the death. जब पर्सन यंग होते हैं तब ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है, बट जब भी इंसान की उम्र हो जाती है तो उसे ऐसे फील होता है एजेड पीपल को कि वो डेथ से ज़्यादा ही करीब है। सो इस कंसेप्ट को लेकर अपनी
मॉम के साथ उनके एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक लोनली वाला जो कंसेप्ट है, आइसोलेशन वाला जो कंसेप्ट है, उसे भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है। बिकॉज एजेड पर्सन सफर्स फ्रॉम दिस फीलिंग, दे फील दैट दे आर वेरी अलोन, उसे ऐसे लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। सो द सेंटिमेंट ऑफ आइसोलेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड aging personality and also the pain of age, because the body also becomes weak and the mental emotional condition also become weak. So जब एज हो जाती है तब सारी कंडीशंस वीक हो जाती है, बॉडी वीक हो जाता है, अपना माइंड जो होता है, इमोशनल कंडीशन होता है वो भी वीक हो जाता है और वो डेथ को अपने ज़्यादा ही क्लोज फील करता है। सो इस थीम को लेकर पोएटिस ने यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी पोएम कंपोज की रखी है। While driving from her parents' home to Cochin, the poem develops on the way the journey from the parents' home to Cochin. ये पोएम जो है वो एक वे पर डेवलप होता है। वो कौन सा वे है कि जो जर्नी है उसके पेरेंट मीन्स जो कमला दास है उनके पेरेंट्स से घर से कोचिन, यहाँ की जो जर्नी है उसके वे पे ये पोएम जो है मेनली डेवलप होती है। शी नोटिसेस हर मदर सिटिंग बिसाइड हर डॉजिंग, हर फेस pale like a dead body and her thoughts far away. These reminds her painfully that her mother is old and could pass away leaving her alone. जब भी जो पोएटिस है वो अपनी मदर की ओर देखती है, उन्हें ऐसे उनका पेल फेस मीन्स डल फेस और उनकी आइज रिंकल्ड फेस, वो सभी चीज़ें देखकर उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर जो है वो काफ़ी एजेड हो चुकी है और वो वक्त अभी दूर नहीं है कि जब वो उससे छोड़कर चली जाएगी। बिकॉज now the mother has become that much aged and the face, the body, the posture, the gesture, the emotional condition, the physical condition, this all are the things remind her constantly that now it will be the time that is not far away from her when actually the mother will leave her alone in this world. That is actually the fear of death, the concept of this poem. Putting that thought aside, she looked out at the young trees speeding by and children running out of their homes happily to play. Actually, the poetess and the mother also, they both observe this activity that boys are playing in the ground outside the car. They observe this thing. Actually, here the mother thinks that she is not able to do so because now the physical condition has become weak. There is lot of difference between the younger age and the old age. The difference according to emotions also we can find, and difference according to the physical condition also we can find here. And at the young trees speeding by, here वो जो ट्रीज़ जो होते हैं वो जब कार चल रही होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रीज़ रन कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट सो बिकॉज ऑफ ड्राइविंग द कार, बिकॉज कार इज़ मूविंग इट कैन बी सीन, इट सीम्स दैट एक्चुअली ट्रीज़ आर रनिंग. दैट इज़ वेरी फनी सीनरी हियर वी कैन फाइंड इन दिस पोएम. These remind her probably of youth and life, her own younger days and her mother when she was young. Actually, because when she found this boys playing and because of she could remember the younger days of her life. When she was young, then she was also habituated to play like this, and obviously the childhood can be same of all the activities, the fun, the joy, the pleasure. You can find the similarity in this age among the children. So these things remind her about the youth and the energy of the youth. Next we can find, but after the security check at the airport, looking back at her mother standing a few yards away, she finds her looking pale, means dull, like the winter moon. Here in this poem the comparison has been made. Students, you can find here the use of figure of speech simile.
the dull face has been compared here. The dull face, the pale face of the mother has been compared here with winter moon. It means like we can find that winter moon is also very dull, very pale, and the same like here the situation, the condition is of the face of the mother. The face of the mother has also become very pale and dull. It means there is no charm, there is no brightness, that it has become very dull because of the age. When the age becomes more, that increased, and that's why people may develop the weakness in the body, and the effect can be found on the face also, on the skin also, and that's why that has been become very pale, dull. She feels that familiar pain and childhood fear of the thought of losing her mother and of being lonely, just as she had been when she was young, because she was different from other children. She could only keep smiling and tell her, "See you soon," knowing full well that she might not see her. Here the poem takes turn, and actually we can find that this is not the happy turn fully. Why? Because when the time of separation, we can find that actually on the airport they both separates, the mother and the poetess, but actually there are so many thoughts, so many ideas in the mind of poetess, but she does not follow all these ideas, all these thoughts that she has inside her heart, because actually in her childhood age also she was different from the other children. She was not like the same way, and that's why here also in this age also she decides to be separated, she decides to leave. जो यहाँ की पोइटिस है उनकी बात यहाँ पे की गई है कि वो जब सेपरेशन का टाइम होता है, यहाँ पे लास्ट जो स्टांजा होता है, लास्ट जो टर्न लेती है पोएम, उसमें हम एक पोएम में एक ऐसे टर्न देखते हैं कि जब जो पोइटिस है उसका और उसकी मदर का सेपरेशन का टाइम आता है कि उन दोनों को अभी अलग होना है, दे वॉन्ट बी एबल टू लिव टुगेदर. ओके, सो बट पोइटिस है जो वो प्रैक्टिकल बन जाती है, उसे पता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि इन फ्यूचर में वो अपनी मदर से दोबारा शायद मिल ही नहीं पाए, बट देन ऑल्सो शी डिसाइड्स टू लीव. सी, शी कुड ओनली कीप स्माइलिंग एंड टेल हर, "सी यू सून," knowing full well that she might not see her. उन दोनों ने एक दूसरे की ओर स्माइल किया, especially here it is all about mother. She was knowing that probably they won't be able to meet each other, but then also they smiled with each other. उन्हें पता है कि वो दोनों शायद अभी नहीं मिल पाएंगे दोबारा फ्यूचर में, फिर भी वो दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं. Students, now let's have a glance on the key points of this poem. The first point, poetess traveling in Cochin airport with her mother in a car. Okay, that is the first point we have to remember. Students, you may keep a note also with you about these key points. You may write on your fair book. Looks at the wan, pale face of her dozing mother. Here actually on the second point there is description about the mental condition and the physical condition of the mother, because she has become very weak, especially physical condition here we can find, because it is all about look, that's why. Old fear of losing her mother returns. Why? Because actually it will be the time of separation, that's why it is the fear, scare. Next point we can find, see students, because of these key points you may keep a note also with you and it will be very helpful in exam also. अगर आप ऐसे key points को अपने पास रख लेते हैं, उसे अच्छे से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सो एग्ज़ाम में आपको ये सभी पोएम का कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी आपके लिए. Old fear of losing her mother returns. Again the scare, the fear of losing the mother, because she knows that now it is the time when actually the death is very close.
from the mother. Sprinting trees and married children, and means here we can say happy playing children, provide the contrast and relief. See, the emotional condition is something else. Panic, okay, stressful, and scared also. And here outside the car, they found the scenery that sprinting the trees, like moving, running, and they found playing children also, playing balls, boys also, many boys. So here that is a kind of paradox, that is a kind of contrast between the mental condition and the reality actually outside the world of someone else. सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है कि उनकी लाइफ कैसी है और वो कैसी लाइफ उनकी पहले हुआ करती थी जब वो यंग थी और जब जो पोएटिस है वो चाइल्ड थी. सो एक तरह की रिलीफ उनके माइंड को मिलती है. दैट इज सेड हियर. नेक्स्ट पॉइंट. After the security check, the old familiar ache returns. Ache means pain. For example, headache. It means a pain in head. After the security check, the old familiar ache returns. Means जब वहाँ पे security check हुआ एयरपोर्ट में, उसके बाद जो पुराना वाला जो दर्द है वो वापस रिटर्न हो जाता है. Why did it return? Because they know that now it is the time of separation and maybe it is possibility that they won't be able to meet again. They won't be able to see each other again in the life. क्योंकि उन्हें पता है कि शायद लाइफ में ऐसा अभी हो सकता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे से कभी देख भी नहीं पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट. ट्रीज टू हाइड हर इमोशंस बाय स्माइलिंग. सी यहाँ पे ट्रीज की कंपैरिजन की गई है. ऐसे बोला है कि सी ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस बाय स्माइलिंग. यहाँ पे एफर्ट्स की बात की गई है. वाई? बिकॉज सी mental condition, emotional condition is very weak, very painful, stressed. So यहाँ पे एक smile is a kind of medium, is a kind of tool that when actually they can hide this feeling, when they can actually hide the pain. अपने पेन को, अपने दर्द को हाइड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने स्माइल का सपोर्ट लिया है. बिकॉज दे कैन कवर द पेन, दैट्स वाई टू शो द स्माइल. Bids goodbye to her mother with a hope to see her again. अपने फेस पर स्माइल ले लेती है और वो अपनी मदर को अच्छी तरह से गुड बाय कर देती है. इन द होप, विद अ होप टू सी हर अगेन. इस एक्सपेक्टेशन में, इस होप में कि इट इज़ द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट दे विल मीट अगेन. यहाँ पे वो दोनों, स्पेशली the daughter, the poetess, possesses this kind of expectation and the hope that they will meet again and the poetess see her mother again in her life. Here at the end of this poem, this is the kind of hope, but actually the reality is something different, something else. The poetess also know about this thing that she won't be able, mostly she won't be able to meet her mother again in the life. शायद वो अपनी मदर को लाइफ में कभी मिल पाएंगी, बिकॉज अभी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मदर ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑफ वोकैबुलरी इन दिस पोएम. वैन, इट मीन्स कलरलेस, पैलेट, वेरी डल, देयर इज नो कलर. लेट विंटर्स मून, इट मीन्स डिम मून, dull moon we can say. There is not that much brightness that should be in the moon. Dim moon shrouded by clouds, means moon that is covered by clouds, that's why that looks very dim, very pale we can say, without brightness we can say. Spilling means run out. Ashen means grey, old age. Ache means pain. Sprinting means short, fast race, running. This word has been used for the trees. It seems that trees are sprinting. It means the trees are running. There is a kind of race among the trees. Let's have a glance on the poetic devices used in this poem.
यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं इस पोएम में उस पर एक नजर डाल देते हैं. द फर्स्ट वन, द फिगर ऑफ स्पीच वी कैन फाइंड हियर simile. Okay, I hope that you all are now familiar with these figures of speech. When, pale as a late winter's moon. Here the comparison has been made. See, here you can find as in the first sentence. That's why you can easily find that comparison has been made with this kind of word as. That's why it becomes a figure of speech simile. जब comparison made की जाती है पर like या as जैसे words use किए जाते हो comparison के लिए, तब easily हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर figure of speech simile use किया गया है. And the comparison has been made with winter's moon. When pale as a late winter's moon. Winter's moon है पर late winter's moon है, उसके साथ जो है वो मदर की कंपैरिजन की गई है. That's why that becomes the figure of speech simile. इसकी वजह से ये simile बन जाता है. Second one, her face ashen like that of a corpse. Here also in second line you may find the use of like word. Here also that is comparison has been made with face that is very ashen like the corpse. That's why it has been become simile. Next one is metaphor. See, in metaphor also we can find a comparison, but in metaphor these words cannot be used as and like. Okay, so these words you will not find here in metaphor. The married children sprinting out of their homes. यहाँ पे like या as का यूज किया जा सकता था. That the married children are sprinting, like in between we can use, but it is not used here. और directly यहाँ पे हम find कर सकते हैं कि sentence बनाया गया है. That's why it becomes the use of metaphor here. The example of metaphor, figure of speech. Next one is personification. Young trees sprinting. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन. व्हेन एक्चुअली द थिंग्स आर नॉन लिविंग, पर फिर भी हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, उसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो ऐसे लगे कि वो लिविंग ही है एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स आर स्माइलिंग. ओके, तो फ्लावर के पास ऐसे फेस तो है नहीं कि वो स्माइल कर सकते हैं, पर इस सेंटेंस में हमने इस तरह से प्रेजेंट किया. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फ्लावर्स आर स्माइलिंग. ऐसा लगता है कि फ्लावर्स मुझे मेरी और स्माइल कर रहे हैं. मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो लिविंग लगता है. दैट्स व्हाई दैट बिकम्स द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन. हियर ऑल्सो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. ऐसे जो ट्रीज है वो इस तरह से दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं ना, उसके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है. रिपीटेशन. आई डिड वॉज. ओके, यहाँ पे I means here it is about poetess. Poetess ने क्या किया? I did was smile and smile and smile. Here it is the repetition of the same word smile. That's why it is repetition, because again and again we can find the same word smile for 3 times in a sentence. Okay, so यहाँ पे वो repetition बन जाता है. Okay students, so here we ended up the revision portion of this poem, My Mother at 66, composed by Kamala Das. I hope you could understand it well. So your today's homework is you have to write down the keywords and vocabulary from this video. आज का ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस वीडियो में आपने जो की वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जो की पॉइंट्स आपने जो डिस्कस किए हैं हमने, वो आपको नोट डाउन करने हैं. एंड द वोकैबुलरी ऑल्सो. स्टूडेंट्स, सपोज यू मे फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, सपोज यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल, देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. ओके, गेट इट वेल, understand it well and learn it well. Okay students, thank you. Have a nice day.